Hey guys, today we will give suggestions if we feels either somebody is doing wrong or someone consults. Welcome to RPN, and it's time to learn with RPN. Let's think and speak English. आज इस चैप्टर में हम सुझाव या सलाह देने का काम करेंगे। अगर आपको अपने बारे में या किसी और के बारे में सुझाव देना है कि कोई एक्शन करना चाहिए, प्लीज यूज अ स्ट्रक्चर somebody should action. Let's take couple of actions with examples for more understanding of this structure. Here is first action. मन की बात सुनना. It means listen to mind. For example, उसे अपने मन की बात सुननी चाहिए. He should listen to his mind. Here is one more action. दिल की बात सुनना. It means listen to heart. Here is an example. तुम्हें अपने दिल की बात सुननी चाहिए. You should listen to your heart. Let's do practice here. Here are some structures. Here are some actions. Please pause the video and do the practice by using each action in all structures. Let's go to the next structure. अगर आपको अपने बारे में या किसी और के बारे में सुझाव देना है कि कोई एक्शन नहीं करना चाहिए, please use a structure. Somebody should not action. Let's take couple of actions with example for this structure. Here is first action. दिल तोड़ना. It means break heart. Here is an example. तुम्हें उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए. You should not break his heart. Here is one more action. मन मारना. It means suppress feeling. Here is example. तुम्हें मेरा मन नहीं मारना चाहिए. You should not suppress my feeling. Let's do practice here. Here are some structures. Here are some actions. Please pause the video and do practice. Let's go to the next structure. Here we will advise for past. अगर आपको अपने बारे में या किसी और के बारे में सुझाव देना है कि कोई एक्शन पास्ट में करना चाहिए था, प्लीज यूज अ स्ट्रक्चर. Somebody should have action plus third form. Let's take couple of actions with example for this structure. Here is first action. मन की बात कहना. It means speak mind. Here is an example. मुझे अपने मन की बात कहनी चाहिए थी. I should have spoken my mind. Here is one more action. दिल की बात कहना. It means speak heart. Here is example. तुम्हें अपने दिल की बात उसको कहनी चाहिए थी. You should have spoken your heart to him. Let's do practice here. Here are some structures. Here are some actions. Please pause the video and do the practice. Let's go to the next structure. Here we will also advise for past. अगर आपको अपने बारे में या किसी और के बारे में सुझाव देना है कि कोई एक्शन पास्ट में नहीं करना चाहिए था, प्लीज यूज अ स्ट्रक्चर. Somebody should not have action plus third form.
Let's take couple of actions with example for this structure. Here is first action, man banana. It means make mind. Here is an example, मुझे वहां जाने का मन नहीं बनाना चाहिए था. I should not have made up mind to go there. Here is one more action, dil lagana. It means attach heart. Here is example, तुम्हें दिल नहीं लगाना चाहिए था. You should not have attached heart. Let's do practice here. Here are some structures. Here are some actions. Please pause the video and do the practice properly. Now let's give more focus on advice. अगर आपको अपने बारे में या किसी और के बारे में सुझाव देना है कि कोई एक्शन जरूर करना चाहिए, please use a structure somebody must action. Here are some examples. हमें देश की सेवा मन से करनी चाहिए. Here is a word मन से. It means willingly. Please speak here. We must serve country willingly. Here is the next example. उसे दिल से बड़ों का आदर करना चाहिए. Here is a word दिल से. It means heartily. Please say here, he must respect elders heartily. Let's go to the next section, daily use sentences. तुमने मेरे मन की बात कह दी. You have spoken my mind. हमेशा अपने दिल की बात सुनो. Always listen to your heart. तुम्हें अपने मन की सुननी चाहिए. You should listen to your mind. मेरा दिल मत तोड़ो. Don't break my heart. अपना मन बना लो. Make up your mind. Let's go to the next section, words for a person. Here is a person, सही सलाह देने वाला व्यक्ति और शुभचिंतक. It means well-wisher. Here is one more type of person, गलत सलाह देने वाला व्यक्ति. It means backseat driver. We should ignore backseat drivers. Let's go to the next sections for idioms and proverbs. We have heard so many times, जिस थाली में खाया उसी में छेद करना. It means bite the hand that feed. It means to act badly towards the person who is helping or who has helped. For example, तुम जिस थाली में खाते हो उसमें छेद नहीं करना चाहिए. You should not bite the hand that feed you. Please pause the video and do the practice properly. Thank you guys. Have a nice time.